कट्स परिवार की तरफ से और रोड सेफ्टी नेटवर्क इंडिया की तरफ से और हमारे सारे राजस्थान में जो रोड सेफ्टी पे काम कर रहे हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब की तरफ से मैं माननीय मंत्री जी श्री प्रताप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाला और इस संवाद में पधारे। बस मैं उनको निमंत्रित करूंगा कि वो अपना आए और आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले मैं मिस्टर जॉर्ज चेरियन जो डायरेक्टर है कट्स पे, उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। जो कट्स का जो रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है उसको जॉर्ज हेड कर रहे हैं और जितने भी रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स हैं वो जॉर्ज के माध्यम से चलाए जा रहे हैं राजस्थान, इंडिया और ग्लोबली। Honorable Minister and my dear friends, first of all, I am extremely happy to welcome all of you to this webinar or dialogue with the Honorable Transport Minister on the topic effective enforcement of key risk factors, opportunities, and challenges. Since we have people from Tamil Nadu to Delhi participating in this webinar, let me first introduce the Honorable Minister, Honorable Minister Sri Pratap Singh Kachariawaz is the Cabinet Minister for Transport in the Rajasthan government. He is the second time MLA representing the civil lines constituency within the Jaipur city limit. Earlier also from 2008 to 13, he was representing this constituency in the Legislative Assembly. More than that, he is the president of the Jaipur City Congress Committee, and also he is the spokesperson of Pradesh Congress Committee. He entered into the politics through the students' politics way back in 1992-93. He was the president of the Students' Union of Rajasthan University. We are extremely happy that Minister had given us the time and joining with us. So on behalf of all of you, first of all, I welcome the Minister to this dialogue. Before moving on, little bit background. As all of you know, India is having the dubious distinction of on the top of the world in terms of road accidents and accident death. In 2019, 151,113 people died on Indian road. This is not only the case of 2019. If you take for the last 10 years, almost 1.5 million people are dying every year on Indian roads. We know the entire world is affected by the pandemic. Even as a result of the COVID-19, thank God, only 135,261 people had died in India so far, thank God. But every year, more than this COVID death, people are dying on Indian road. Rajasthan also, comparing with the previous year, about 23,480 accidents were there and 10,563 people lost their life in on the roads in Rajasthan. So Rajasthan is having the 7th rank in terms of road accidents and death. And as a step to address this, as a result of almost 5-year advocacy, last year in the August, on the 9th of August, the Motor Vehicle Amended Act came into force. The President of India had given the assent, and most of the clauses related to the enhanced penalty was notified on 1st of September itself. And the central motor vehicle rules also came into effect on 1st of October. Rajasthan also had notified this act on the 8th of July this year, 2020. This is the background. So we have got a new act with a lot of provisions and enhanced penalty to deal with the road accident. As I mentioned earlier, we are specifically focusing today in this dialogue on the 5 key risk factors. Before moving on to that, just one more thing I will mention. As all of you know, CUTS is involved in the road safety activities for the last almost 4 decades, beginning from the 1991 itself. And presently, the CUTS is part of the road safety network in India.
all the organizations working on road safety in partnership with the Global Road Safety Partnership comes under this network. Under this network, a series of webinars is organized. On the 8th of September, Honorable Transport Minister Nitin Gadkari came into this platform and spelled out a lot of action to reduce, not even up to 2030, to reduce the road accident fatalities by 50% by 2025 itself. He had announced in this platform. And even he had appreciated the efforts made specifically by Rajasthan in that particular webinar. So in continuation to that national webinar, we are organizing a series of webinars. This is the second webinar that CUTS is organizing. On the 6th of October, there was a webinar involving various state officials. And today we are organizing this, interacting with the Honorable Minister. When we are coming back to the 5 key risk factors, as all of you know, these are the speed, the drink and drive, the helmet, seat belt, and dangerous driving. And one more is added now, that is the distractive driving. If you look at the national data of 2019 of Ministry of Road Transport and Highways, overspeeding is the cause of death of 67.3% of the total road accident death. That comes to 101,723 people had lost their life as a result of overspeeding, 67.3. Second one is not wearing helmet, 29.82%. That is 45,066 people lost the life. I'm not going into the details. If we look at Rajasthan, it is almost reflecting the same national data. Overspeeding, 9,050 people lost their life in 2019. That means 19,889 accidents were as a result of overspeeding. Second one is not wearing helmet is second in the rank. 1,714 people lost the life in Rajasthan. Third one is not wearing seat belt. 840 people lost their life in Rajasthan alone. That means not wearing seat belt. Rajasthan is having the second rank in the country. Among all the states in India, second maximum number of people lost life in Rajasthan. However, there are certain positive signs are there. If we take 2020, overall in the quarter January to March, there was a reduction of 8% was there. And in the quarter April to June, overall at the national level, there was a reduction, and Rajasthan, there was a reduction of 49.93% comparing with the same period the previous year in terms of the decline in the number of deaths. This is a very positive sign. That means 2019 in April to June, 2,972 people lost life. This year in the quarter, only 1,488 people had lost. We need to see, we need to get more data, whether it was only because of the lockdown or whether the amended act had started showing the result. You know, much more analysis is required. With this background, I would like to raise 2 specific questions to the Honorable Minister. I have mentioned about the amended act and the Rajasthan notifying. What are the specific measures taken by Rajasthan for the enforcement of this Motor Vehicle Act 2019? It is notified, you know, and what resulted in reduction of these accidents in the quarter April to 20, whether it is as a result of the lockdown or it is because of the act is strongly implemented on the ground. And also Rajasthan is one of the states which had expressed its concern about the enhanced penalty as well. So how Rajasthan is going to implement this? Because sometime back it was announced that every year 5% Rajasthan will reduce the accident. So what is the action plan and how it's moving forward? That is question number 1. Number 2 is with regard to specifically with regard to this
key risk factors. The speeding I have already mentioned, especially in the national highways and the state highways. So whether Honorable Minister can tell us, what is the measures that is in plan for addressing this speed, and also within the city limit, to make the, especially the two-wheeler users, to make the them to wear the helmet, and other people to wear the seat belt, the four-wheeler vehicle users, because national level 37.1% of the total death is the contribution of two-wheeler users. So would like to hear from the minister the efforts made by Rajasthan. With this introduction, I invite Honorable Minister to tell us more about the scenario in Rajasthan. Over to you, sir. रोड सेफ्टी को लेकर मैंने मिस्टर जॉर्ज चैरियन को सुना, डायरेक्टर कट्स को। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने क्लियर सारी स्थितियां, परिस्थितियां जो देश में घट रहा है वो सब हमारे सामने रखा। मैं इतना कह सकता हूं कि हम सब की जिम्मेदारी है, पूरी कंट्री की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए जितने अच्छे कदम उठा सकते हैं वो कदम हम उठाएं। इसके लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार, सब लोग चिंतित हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि भारत रोड एक्सीडेंट के मामले में नंबर 1 पर है, और जब नंबर 1 पर भारत है पूरी दुनिया में, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमियां हमारे में है, और वो कमी सेल्फ डिसिप्लिन की भी है। हर व्यक्ति यदि सेल्फ डिसिप्लिन को स्वीकार कर ले और रोड पर सेल्फ डिसिप्लिन को मानते हुए देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, रोड सेफ्टी के लिए जो हमारी मॉरल ड्यूटीज है, यदि उसको हम निभाएं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अब रोड एक्सीडेंट को बहुत कम कर सकते हैं। हम सब जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ सरकारों के भरोसे नहीं रहे, लेकिन सरकार में जितने भी लोग हैं उनको समय समय पर राय देना, कोई एडवाइस है तो आप उस एडवाइस से उनको अवगत कराना। आज स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की सरकार की यदि आप रोड सेफ्टी को लेकर आपके पास कोई भी बड़ा प्लान है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं उस प्लान को राजस्थान में हम लागू करेंगे। आप हमारे साथ बैठिए, बैठकर डिस्कस कीजिए, आपके प्लान को हमारे साथ शेयर कीजिए। वैसा का वैसा प्लान, आदमी की जान की कीमत हमारे लिए सबसे पहले है। जान है तो जहान है, और लोगों को बचाने के लिए राजस्थान की कांग्रेस की सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास कोई फुल प्रूफ प्रोग्राम हो तो आप वो लेकर मेरे साथ बैठिए। आपके कोई जो भी आपके कोलिग्स हैं, वो आपकी टीम के लोग हैं, वो भी आ सकते हैं। मैं राजस्थान में उस मॉडल को जो आपके पास है, इससे रोड एक्सीडेंट रुक सकते हैं, तो लागू करने के लिए तैयार। रोड्स पर अभी हमने जितने भी नेशनल हाईवेज है, वहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटीज को बुलाकर मैंने उनको डायरेक्शन दिए कि जो रोड कट्स हैं, जगह जगह रोड्स खुली पड़ी है, वहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। छोटी छोटी घटनाएं, रोड यदि टूटी हुई है, कहीं खड्डा हो गया तो भी एक्सीडेंट होता है। ऐसे में छोटी छोटी बातों के लिए मैंने हमारे डिपार्टमेंट के लोगों से कहा है कि आप बड़े से बड़ा फाइन लगाइए, कुछ भी कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम छोटे प्लेयर को तो मार दें और बड़े प्लेयर को छोड़ दें क्योंकि बड़ा आदमी है। इसके ऊपर कार्रवाई हम नहीं कर सकते। हमने, राजस्थान सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन का निर्णय लिया है कि यदि कोई भी बड़ी टोल कंपनियां जिम्मेदार है रोड्स के टूट फूट के लिए, साइड में बैरिकेटिंग उन्होंने नहीं की है, यदि कट्स कहीं खुले पड़े हैं रोड पे कट्स और उससे एक्सीडेंट होते हैं तो उनके खिलाफ हम बड़े फाइन करने जा रहे हैं, और हम कर चुके हैं। मैंने अभी मेरी डीसी डायरेक्शन दिया है। आपके पास भी, आप तो रोड सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आपका लगातार काम चल रहा है रोड सेफ्टी के लिए। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और रोड सेफ्टी में जब किसके घर का कोई भी व्यक्ति जाता है तो आप उसके दर्द का अंदाज कर सकते हैं।
मैं आज मेरी बहुत मीटिंग्स है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और राजस्थान की सरकार की ओर से एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, जब भी आप मुझे आपके आइडियाज से अवगत कराएंगे, मेरे लाइक कोई भी काम होगा स्टेट के हित में, कंट्री के हित में, हम जो भी कर सकते हैं वो सब करेंगे और ये सब काम करना हमारी जिम्मेदारी है। आप कभी भी यहाँ पर राजस्थान में सादर आमंत्रित है। राजस्थान की सरकार उन सब लोगों का बहुत सम्मान करती है जो रोड सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग रोड सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम आगे बढ़कर जो भी कर सकते हैं वो सब करेंगे और उस रोड सेफ्टी के लिए लोगों के जीवन को बचाने के लिए सब कुछ किया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय। Sir, please give us a few more minutes because the participants are eagerly waiting to listen from you. Thanks for your initial response, sir, and the appreciation about the road safety work cuts and others are doing in Rajasthan and elsewhere. Definitely, we have a lot of suggestions and we will come and meet with you and discuss with the plan. We are already in touch with the transport department and the road safety cell. We will definitely come to you to discuss about the thing. You have mentioned about the strict implementation of the rules in Rajasthan. And also you have mentioned there is a need for discipline, self-discipline. But that is our problem, sir. The behavioral change, we Indians, until and unless we have a stick behind us, there is no, discipline will be there. You know about the measures taken for, dealing with the COVID. There is a fine, everybody has to wear the mask or now night curfew, but people are just seeing how we can jump, not wearing the mask or move around and things like that. So that is one of the, reason for the enhanced penalty as a deterrent for serious road safety violence. Then there is an opposition coming from the people, poor people, how they will pay 1,000 rupees and 5,000 rupees and things like that. So what is your specific view on this enhanced penalty and how we can make people aware about the need for wearing helmet or the seat belt or to control the speed and things like that. So we would like to hear from you. Other colleagues also asked her to listen from you. I asked my colleague Madhusudan Sharma. Madhusudan. Yeah. Can you repeat your question, George? No, I have mentioned few questions. You can add on to that. If anything is there, yeah. Yeah. जैसा कि आपने पूछा था, राजस्थान में जो एक्ट है उसको इफेक्टिवली पर कैसे लागू करेंगे और हाईवेज के बारे में सबने ऑलरेडी बता ही दिया है, लेकिन हमारा एक सवाल था कि राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है रोड सेफ्टी को कैसे इफेक्टिव बनाया। मैं एक बार इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली हमने पूरे अलग अलग स्टेट में रोड सेफ्टी का इवैल्यूएशन किया था, उसमें ये पाया था कि राजस्थान में मैक्सिमम कमेटीज है, तो चीफ मिनिस्टर लेवल पे कमेटी है, चीफ मिनिस्टर लेवल पे रोड सेफ्टी कमेटी बन रही है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उसमें उसके नीचे जाएंगे तो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे है और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज बहुत है। लेकिन हमें लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेने हैं, तो उसके लिए राजस्थान सरकार क्या करने जा रही है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उसके लिए भी मंत्री जी का मैं रेस्पॉन्स चाहूंगा था। देखिए, राजस्थान सरकार पूरे स्टेट में रोड सेफ्टी को लेकर बहुत सीरियस है। चीफ की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, मेरे लेवल पे अलग कमेटियां बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग कमेटियां बनी हुई है। राजस्थान सरकार रोड सेफ्टी को लेकर बहुत सीरियस है और आप लोगों के पास भी कोई प्लान है तो मैंने आपको इनवाइट किया है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम बहुत ज्यादा चिंतित है इस बात को लेकर के एनी हाउ कैसे भी रोड एक्सीडेंट कम किए जाए। इसीलिए हमने तमिलनाडु पैटर्न पर
हमारी एक पूरी टीम लगाई है। तमिलनाडु में रोड एक्सीडेंट की घटनाएं कम हुई है, वहां का पैटर्न बहुत अच्छा माना गया। हम उस पैटर्न को भी फॉलो करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी एक पूरी टीम तमिलनाडु भेजी गई है जो उस पैटर्न को पूरी तैयारी कर रही है यहाँ लागू करने की। तो वो काम भी हम राजस्थान में करने लगे। सर मेरा एक अंतिम सवाल था कि हम, चूंकि जैसा मैंने बताया कि हम ग्लोबली भी कई रोड सेफ्टी पे इश्यूज पे काम करते हैं, रीजनल लेवल पे और इंडिया लेवल पे भी बहुत सारे इश्यूज पे काम करते हैं। हमने पाया कि जो अर्बन और रूरल में रोड सेफ्टी सिनेरियो में बहुत सारा डिफरेंस है, एनफोर्समेंट स्पेशली। हमें ये देखने को मिलता है कि रूरल एरियाज, ग्रामीण परिवेश एरिया में जो एनफोर्समेंट है वो थोड़ा सा वीक हमें मिलता है। तो स्पेशली ग्रामीण, ये आप मानकर चलिए, जो सवाल मधुसूदन जी ने किए उस पर हम पहले से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी है। और तमिलनाडु पैटर्न पर तो आपको मैंने बताया कि तमिलनाडु पैटर्न पर हमारा काम पहले से चल रहा है। राजस्थान में हम 50,000 पंचायतों में सड़क सुरक्षा अग्रदूत बना रहे हैं। सड़क सुरक्षा अग्रदूत हर गांव में होंगे, 5-5, 25-25, जो कि सरकार के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के लिए काम करेंगे। ऐसे प्राइवेट लोगों को पंचायत स्तर पर हमारी बड़ी तैयारी है कि कम से कम 50,000 सड़क, 5 लाख की हमारी तैयारी है। 5 लाख सड़क सुरक्षा अग्रदूत गांव में हम तैयार करें। 50 सड़क सुरक्षा अग्रदूत एक पंचायत समिति में हो, लगभग एक गांव में 2 लोग हो। ऐसी हमारी तैयारी है, उस पर हम काम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट जल्दी नजर आएगा। Over to you, George. Anything to ask, sir? Thank you, sir. जब हम बैठेंगे, आप लोग आएंगे यहाँ पर, आपका वेलकम है, तब पूरा डिस्कस करेंगे। मैं क्या, हर पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो, मैं हूं, सब लोग हम चिंतित है सड़क सुरक्षा को लेकर। थैंक यू। Yeah, thank you, sir, for your participation and also for your time.